Unfortunately, not able to present as down with conjunctivitis. But Repetition Civil 199/2019, in which Mr. Ramchandran was appearing, although two parties have withdrawn, there are other petitioners who are still prosecuting this case, and that there will be representation for that as well. All right. Yes. We will be clearing that for the remaining petitioners, Mr. President. And we are still hoping that Mr. Ramchandran that there is Let us know as difficulty that. Mr. With regard to main witness, it's clear that with regard to interveners, what the nodal officer has given us that. we'll see about the interveners. Let's first hear the council and then we'll see what remains. What is to decide? Yes, suggested the time frame. We will then we'll see. Of course, we'll not. We'll certainly decide at the end of the once we have a few of the leading council who make their submission. We know what areas will remain. We'll assign some time. Yes, Mr. Simple would be adding each petition so that we can have The other is in grade 370 now. no, who you represent, that's all, so that we can say the pleadings Mr. from Known. no, Yeah, is I've got known with you. Yes. Because this is indeed, Millers, according to me, a historic moment in many ways. First, Millers, that your Lordship should be analyzing why history was tossed out on the 6th of August 2019. Whether the procedure adopted by Parliament was consistent with what democracy stands for. Whether the will of the people of Jammu and Kashmir could be silenced in this fashion. Whether they will be denied a representative form of government through a diktat of the Union inconsistent with our Constitution. It is also historic because it has taken 5 years for your Lordship to start hearing this case. And for 5 years, Manus, there has been no representative government in the state of Jammu and Kashmir. It is also historic because whether that historic relationship between sovereign authorities would have been jettisoned in this fashion by seeking to amend the Constitution and seeking to efface Article 370. Whether, Manoj, a governor of a state would have, on the 20th of June 2018, decided that I will keep the assembly under suspended animation, which is the power of the governor alone under the JNK Constitution, without even trying to find out whether they can form a government or not. Because on the 19th of June, a particular party withdrew support, and on the 20th of June, the governor passed this order. Whether on the 21st of November 2018, a dissolution of the assembly could have taken place before the imposition of Article 356. The governor on the 21st of June dissolved the assembly without reference to 356. And thereafter Article 356 was used. And the manner that it was used will be malicious. I will address your lordships on this issue. These are issues that will arise for your lordships to make consideration, never raised, never decided by this court. So in that sense too, it is historic. So I will proceed because there is a historical context to the state of Jammu and Kashmir. So I will have to take your lordships through that history. And if your lordship will permit me, I'll start with the list of dates. Mr. Sipal, as all council know that all in the court on the basis of speech to text software. Like in the Maharashtra case, by the end of the day, the transcripts will be given to the arguing counsel. The juniors can just verify that there are no mistakes. If there are any corrections, they can be given to the registry so that we will upload them immediately on our website. So they are available for everybody then to. That will also help counsel who are following. Of course, it helps us as well as everybody else. So I'll start off with the list of dates, which is volume 2.
Written Submissions, Volume 2, PDF page 33. Well, that's Written Submissions, Volume 2, PDF page 33. We were reluctant students, so that your lordships ensured that we become disciplined students. Yes, the list of dates, because it's somewhat elaborated, because it will give you a flavor what the issues are. And 33 minutes, PDF page 33. It's called Appendix 1, List of Dates and Events. So March 1843. That's correct. That's correct. Loop is 33 minutes. Just 30. Yeah. Okay. Fine. Yeah. That's so much. Yeah. चलिए 10:45 के आसपास समाअत का आगाज़ हुआ है। सीनियर वकील सुप्रीम कोर्ट के कपिल सिब्बल इस वक्त दलाइल पेश कर रहे हैं, उनकी तरफ से अपनी बात रखी जा रही है। और जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 से बाद की जो सूरत हाल है, लेकिन उससे पहले भी कुछ फैसले जिनमें नवंबर में integration of Jammu and Kashmir into India is unquestionable. Was unquestionable and always remain unquestionable. That was a given. And despite that, the whole structure was overnight changed through a process which I will demonstrate was unconstitutional. When your lordships will be dealing with this matter, there will be 4 legislations in a sense that you will be dealing with. One is the Constitution of India. The second is the Constitution of India as applicable in the state of Jammu and Kashmir. Third is the Constitution of Jammu and Kashmir. And fourth is Article 370. The interaction between these 3 constitutions in the context of Article 370 is something that your lordships will have to look at as we move forward. But please keep that in mind. The reason why I say Constitution of India is applicable to the state of Jammu and Kashmir, that over time there were several orders issued, constitutional orders from time to time, which were incorporated in the Constitution of India applicable to Jammu and Kashmir.
The result was that most of the powers or most of the responsibilities and powers were actually in tandem with the Constitution of India. There was in fact really no difference other than Article 370 itself. All the laws were applicable, except that those laws were replicated in the constitutional orders of the government of India. Therefore, there was no reason to take away this right. It's in that context that I'm mentioning this. Now that I go to this text. On the 9th of March 1846, the Treaty of Lahore was executed between Maharaja of Lahore and the British government, resulting in the transfer of certain territories to the East India Company. In particular, under Article 4 of the treaty, the Maharaja cedes to the Honourable Company all its forts, territories, rights and interests in the hill countries which are situated between the river Beas and Indus, including provinces of Kashmir and Hazara. Earlier, Jammu's Maharaja Gulab Singh's general Zorawar Singh had invaded Ladakh in 1834. Ladakh came under Dogra rule and was incorporated into the state of Jammu and Kashmir in 1846. During the Sino-Sikh War, the Qing Empire invaded Ladakh, but the Sino-Tibetan army was defeated. Ladakh was claimed as a part of Tibet by Phuntsok Wangyal, a Tibetan communist leader. In 1947, partition left Ladakh a part of the Indian state of Jammu and Kashmir to be administered from Srinagar. On the 16th of March 1846, following the Treaty of Lahore, the British government executed the Treaty of Amritsar on March 16, 1846. Under the treaty, the hilly mountainous country with its dependencies situated in the east of River Indus and west of River Ravi, including Chamba and excluding Lahore, was transferred by the British government to Maharaja Gulab Singh of Jammu. The reason was simple, brothers. There was a violation of the Treaty of Lahore, and therefore compensation had to be paid, brothers, to the British government. He was not able to pay that compensation. In lieu of that compensation, these territories were ceded. That's what happened. On the 30th of June 1857, Gulab Singh died and was succeeded by his son Ranbir Singh. Following the passage of the Government of India Act 1858, territories formerly in possession under control of the East India Company were vested in the British monarch in whose name India was to be governed. 1885, Maharaja Ranbir Singh died and was succeeded by Maharaja Pratap Singh. In 1889, 30th of August, the Interpretation Act of 1889 was passed by the UK Parliament. Section 18.4 of the Act defined the expression British India. All territories and places within Her Majesty's dominion, which are for the time being governed by Her Majesty through the Governor General of India. In addition, the term India was defined under Section 18.5 as British India, together with any territories of any native prince or chief under the suzerainty of Her Majesty exercised to the Governor General of India. You would note here that Jammu and Kashmir is not part of this. In 1925, Maharaja Pratap Singh was succeeded by Maharaja Hari Singh, the last ruler of the princely state of Jammu and Kashmir. And on the 20th of April 1927, the expression state subject was defined in the state subject definition notification dated April 20, 1927, which was issued by Maharaja Hari Singh. This notification classified state subjects into 4 classes and subsequently became the basis for the definition of permanent residents of Jammu and Kashmir under the Constitution of Jammu and Kashmir and Article 35A of the Constitution of India. Your Lordship need not go into it because we are not really dealing with that, but I'm just mentioning. On the 22nd of April 1934, Maharaja Hari Singh enacted Regulation 1 of Samvat 1991 on April 22, 1934. Wherever there is Samvat, if you take away 57 years, that gives you the year. The regulation established a legislative assembly for the state of Jammu and Parliament, comprising governors' provinces, chief commissioners' provinces, the Indian states which had or would accede to the Federation of India. Under Section 6 of the said
said Act, the ruler of Indian princely states was empowered to execute an instrument of accession, declaring that he accedes to the Federation of India, subject to the terms of such instrument. Under Section 2, an instrument of accession was to specify matters with respect to which the federal legislature would have competence to legislate for a particular state and the limitations, if any, on the federal legislature's powers to make laws or exercise executive authority over such state. Notably, as the state of Jammu and Kashmir was not a part of British India, provisions of the Government of India Act 1935 did not apply to it unless an instrument of accession was executed by a ruler in accordance with Section 6. On the 7th of September 1939, the Jammu and Kashmir Constitution Act 1939 was promulgated. While Maharaja Hari Singh retained sovereignty and supremacy over all legislative, executive and judicial functions, the Act provided the Praja Sabha to make laws for the entire state of Jammu and Kashmir or any part thereof, subject to certain conditions. Further, the said Act vested executive functions with council consisting of a Prime Minister and other ministers appointed by the ruler. The Act also provided for the High Court, which had been established by the ruler in 1928, to be a court of record with jurisdiction to adjudicate upon inter alia civil suits, civil, criminal and revenue suits. On the 16th of May 1946, the Cabinet Mission issued a statement regarding its report. Under paragraph 15(1) and 4 of that statement, the Cabinet Mission plan envisaged a Union of India where the Union would have responsibility over defense, foreign affairs and communications, and the states would retain jurisdiction over all other subjects not ceded to the Union. On the 12th, 22nd of May 1946, the Cabinet Mission issued a memorandum titled States, Treaties and Paramountcy, which affirmed that following the establishment of an independent government in India, the paramountcy of the British monarch over Indian states would lapse and paramountcy power over their respective territories would return to the states. On the 19th of December 1946, the Constituent Assembly of India, in terms of the Cabinet Mission Plan, met for the first session. On the 22nd of January 1947, the Constituent Assembly of India unanimously adopted the Objectives Resolution, which declared the Assembly's firm and solemn resolve to proclaim India as an independent sovereign republic. Importantly, paragraph 3 of the Objectives Resolution declared that princely states that had joined the Union of India, and I quote, whether with their present boundaries or with such others as may be determined by the Constituent Assembly, and thereafter according to the law of the Constitution, shall possess and retain the status of autonomous units, together with residuary powers, and exercise all powers and functions of government and administration, save and except such powers and functions as are vested in or assigned in the Union. On the 25th of January 1947, the Constituent Assembly adopted a resolution for the establishment of the Union Powers Committee to inter alia draw up lists of matters included in the and interconnected with the subjects assigned to the Union before the framing of the Constitution. On the 5th of July 1947, the Union Powers Committee submitted its second report to the Constituent Assembly. Significantly, the report noted in paragraph 3, and I quote, it is necessary to indicate the position of Indian states in the scheme proposed by us. The states which have joined the Constituent Assembly have done so on the basis of the 16th May statement. Some of them have expressed themselves as willing to cede wider powers to the center than contemplated in that statement. But we consider it necessary to point out that the application to states in general of the federal list of subjects, insofar as it goes beyond the 16th May statement, should be with their consent. It follows from this that in their case, residuary powers would vest with them unless they consent to their vesting in the center, and your Lordship knows whether that consent was given. The UK Parliament on 18th of July 1947 passed the Indian Independence Act of 1947. Under 1.1 Section 1.1 of the Act,
from August 15, 1947, two independent dominions, India and Pakistan, were to be established. Significantly, Section 7(1)(b) of the Act stated that following independence, the sovereignty of the British monarch over Indian states would lapse and return to the rulers of such states. Resultantly, as sovereign states, as many as 562 princely states had the choice to remain independent or accede to either of the two dominions established by the Act. Lastly, as a transitional measure, Section 8 prescribed that provisions of the Government of India Act 1935 would continue to apply to the Dominion of India and Pakistan subject to certain conditions. Under Section 9 of the Indian Independence Act, the Governor General issued the India Provisional Constitutional Order 1947, which made certain sections of the Government of India Act 1935 applicable to India, until other provisions were made by the Constituent Assembly. Among the applicable provisions was Section 6, which dealt with accession of princely states to India through the execution of the instrument of accession. On the 15th of August, India attained independence and was partitioned into the dominions of India and Pakistan. Further, as British paramountcy had lapsed, princely states that had not executed instruments of accession with either dominion became independent states. These included the states of Junagadh, Hyderabad, Jammu and Kashmir. On 26th of October 1947, the ruler of Jammu and Kashmir made an offer of accession to India, asking for help from the Indian Dominion to meet a grave emergency caused by mass infiltration of tribesmen drawn from distant area of northwest frontier, coming regularly in motor trucks, Manshera-Muzaffarabad road, and fully armed with up-to-date weapons, which cannot possibly be done without the knowing of the provincial government of the Northwest Frontier Province and the government of Pakistan. In the instrument of accession signed by him on the same date, he declared his accession to India subject to the terms of such instrument. Under Section 3 of the instrument, the Dominion Legislature had authority to make laws for the state of Jammu and Kashmir on the subjects of defense, external affairs and communication. Article 7 provided that the instrument of accession did not commit the ruler to the acceptance of any future constitution of India, while Section 8 vested sovereignty over subjects not acceded to India in the ruler. But there's two issues I want to flag here. Your Lordships, in the course of this hearing, will have to determine what does a Constituent Assembly stand for. The Constituent Assembly stands for enacting a constitution for the future of the territories with respect to which the constitution is to apply. It's essentially a political exercise. It's not a legal exercise. It's a political exercise to take into account the aspirations of people. What kind of state? सीनियर सुप्रीम कोर्ट के वकील कपिल सिब्बल इस वक्त अदालत में दलाइल पेश कर रहे हैं और तकरीबन आधे घंटे का उन्होंने वक्त लिया। बड़े तहम्मुल के साथ बेंच उनको सुन रही है। वो कुछ तारीखी वाक़यात हैं वो भी एक एक करके उनके सामने रख रहे हैं, कुछ मसाइल हैं उनको भी डिस्कस किया जा रहा है और इन वाक़यात के साथ साथ जो 4 बरसों की सूरत हाल और जो फैसला लिया गया 5 अगस्त को और जो हिकमत अमली थी, जो तरीक़ाकार था, उस पर भी अपनी बात रख रहे हैं। कुछ बड़ी बातें आपको और बताएंगे यानी आज के केस के हवाले से और मज़ीद क्या कुछ हो रहा है। छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के उस पार दफ़ा 370 पर नॉन स्टॉप कवरेज नई दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट से बराह रास्त जारी रहेगी छोटे से तिजारती वक्फे के फौरन बाद। पहले नहीं बता सकते थे ये दिखता नहीं है ये। अच्छा, सर कहाँ गए? सर हैं कहीं? सर को लाइव खड़े। सर ये ग्राफिक्स देखना आपके पास आए? 11:30 में फोल्डर एक बना हुआ, शायद उसी में डाल दिए होंगे इन्होंने फाइनल। ये आपके पीछे जो है इन्होंने ही दिए। तो 370 पर समाअत चल रही है। दरख्वास्तों पर जो समाअत 20 के करीब दरख्वास्तें हैं। अब तक का जो अपडेट है जुमेरात की शाम तक, यानी आज शाम तक कोशिश करेंगे कि कपिल सिब्बल अपनी बात मुकम्मल कर सकें। एक बात उन्होंने ये कही है
क्योंकि तारीखी वाक़यात हैं उनको डिस्कस करना है, हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स हैं, जो हुकूमतें बदली, प्रिंसी स्टेट के अंदर क्या हुआ आज़ादी से पहले और उसके बाद, वाक़यात की तारीख देखने के लिए कुछ मज़ीद वक्त दरकार है। कहाँ है सर? चलो बोलना 11:30 रेडी रहो। हाँ बस 10 मिनट तो रहे, ठीक है। और कहा गया कपिल सिब्बल की तरफ से जो दलील दी गई कि दफ़ा 370 का मकसद जमहूरियत को बहाल करने के लिए था, इसी आर्टिकल को जमहूरियत को नापाक करने के लिए कैसे इस्तेमाल किया गया। एक बात, फिर रातों रात जो तरीक़ाकार, जो इक़दामात उठाए गए, गवर्नर चाहते तो पहले स्टेक होल्डर्स के साथ या उस वक्त जो पॉलिटिकल पार्टीज थी उन साथ बात कर सकते थे, लेकिन जो तरीक़ाकार उन्होंने अपनाया वो गैर आईनी था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे में हटाया गया। कपिल सिब्बल ने जो दलील दी है, उस वक्त के जो गवर्नर थे, जो तरीक़ाकार उन्होंने अपनाया वो बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं था। और जम्मू कश्मीर की जो पोजीशन भारत के साथ थी वो बरकरार है, रहेगी, कोई भी इसे तब्दील नहीं कर सकता, जो अदालत के अंदर कही गई है। कपिल सिब्बल ने काफ़ी मुद्दत तक दलाइल दिए और बेंच बड़े बगौर और तहम्मुल के साथ उन्हें सुन रही है। पहले हियरिंग पे ही चलेंगे, ठीक है। उमर अब्दुल्ला को भी फिर बीच में तो पहले ब्रेकिंग में यहीं से दूंगा, ठीक है। और कुछ और बड़ी बातें हैं वो चलिए पहले ब्रेकिंग। वेलकम बैक, गुलिस्तान न्यूज आप देख रहे हैं दिल्ली के स्टूडियो से बराह रास्त में आसिफ रशीद। दफा 370 पर समाअत इस वक्त जारी है। 370 को लाने का मकसद जमहूरियत को बहाल करना था। कपिल सिब्बल ने जो दलीलें अभी तक दी हैं, कहा कि रातों रात जो इकदाम उठाया गया, जो कदम उठाया गया, जो तरीकाकार था वो गैर आईनी था। गवर्नर चाहते तो उस वक्त मुतलकिन के साथ बात भी कर सकते थे। गवर्नर ने आईनी तरीकाकार को नजरअंदाज किया। अदालत उज़्मा में उनकी तरफ से ये बात रखी गई है। साथ ही साथ चूंकि रातों रात ये फैसला लिया गया और पहले असेंबली तहलील की गई और 370 की तनसीक से पहले भी असेंबली को तहलील करने के हवाले से गौर ख्वाज किया जा सकता था। कपिल सिब्बल ने जो दलील पेश की है, इसके अलावा उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की जो पोजीशन भारत के साथ थी वो अनक्वेश्चनड है, कोई सवाल का निशान उस पर नहीं है, न था न कर सकता है। उस पोजीशन पर किसी तरीके से किसी का एतराज़ नहीं। लेकिन जिस आर्टिकल को जमहूरियत की बहाली के लिए और मजीद बेहतरी के लिए उस वक्त इंट्रोड्यूस किया गया या लाया गया, आइन की रूह से बहुत ज़रूरी थी, अहमियत की हामिल थी, उसी दफ़ा 370 को जिसका मकसद जमहूरियत की बहाली था, जमहूरियत को नापाक करने के लिए इस्तेमाल किया गया। फिर जो तरीक़ाकार था, कुछ तारीखी पस मंज़र में वो बात कर रहे थे, पीछे चले गए और कैसे महाराजाओं की कभी रियासत रही, मौजूदा वक्त में यूटीज़ तक सफ़र रहा, लद्दाख और जम्मू कश्मीर का, उस पर उन्हें जिक्र किया और पीओके का भी हवाला दिया कि कैसे ये एक हिस्सा था, कैसे तकसीम हुई। फिर उसके बाद अक्टूबर के महीने में जो जो चीज़ें हुई, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन तक, ये सारे दलाइल इस वक्त 5 रुकनी आईनी बेंच के सामने कपिल सिब्बल रख रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ इससे पहले मजीद हम सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाएं। जम्मू कश्मीर के साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला जो सुप्रीम कोर्ट में खुद इस वक्त मौजूद हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की अर्जी भी आ चुकी जिस पर समाअत होनी है, उन्हीं भी इस अर्जियों में है जिसने 5 अगस्त 2019 के फैसले को चैलेंज किया है। उमर अब्दुल्ला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो हमारे नुमाइंदे ताबिक कमाल ने उनके साथ बात की। उमर अब्दुल्ला का रद्द-ए-अमल क्या था, पहले वो सुनाते और उसके बाद वापस सुप्रीम कोर्ट चलेंगे। हमारे साथ उमर अब्दुल्ला साहब सब कोर्ट पहुंच गए हैं। आप अभी जो 2 अगस्त से लेकर के आज से बहुत अहम दिन मान रहे हैं, कैसे देखना है? अब उम्मीद लेके आए हैं और अब मौका मिला है पार्टी की तरफ से, जम्मू कश्मीर की आवाम की तरफ से, चीफ जस्टिस और उनके जो सहयोगी जज हैं उनके सामने अपना जो मौक़िफ़ है वो रखने का। और हमें तो पहले दिन से लगा कि जो जम्मू कश्मीर के साथ हुआ वो सियासी तौर तो छोड़िए, मैं कहता हूँ आईनी तौर और कानूनी तौर, तो हम इंसाफ हासिल करने के लिए आज सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे को खटखटा रहे हैं और वही इंसाफ की उम्मीद लिए बैठे। जम्मू कश्मीर की पूरी आवाम आज आप लोगों की तरफ देख रही है। जम्मू कश्मीर की पूरी आवाम हमारे तरफ नहीं, सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है। यानी कहीं ना
साबिक वज़ीर आला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला बात कर रहे थे कि जो कुछ जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ सियासी तौर तो गलत हुआ ही, लेकिन मरकज़ ने जो किया या बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के साथ जो किया, अगरचे वो उनके एजेंडे में शामिल था, लेकिन जो इकदाम थे वो गैर आईनी थे, गैर कानूनी थे। उमर अब्दुल्ला बात कर रहे थे। इधर ऐवान की कार्रवाई भी इस वक्त चल रही है, लेकिन साथ साथ सबकी नज़रें सुप्रीम कोर्ट पर भी हैं। मजीद इस पर गुफ्तगू करेंगे और बात इस पर करनी है, लेकिन रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी जो इस वक्त केस में चूंकि पहले दिन से ही देख रहे हैं, उनकी जानिब से जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की अर्जी है, जो पूरा ग्रुप था उसको लीड भी वो अब तक कर रहे थे, पार्लियामेंट के अंदर भी, पार्लियामेंट के बाहर भी, और सुप्रीम कोर्ट में भी इस वक्त रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी मौजूद हैं जो रुकने पार्लियामेंट हैं साउथ कश्मीर से। उन्होंने भी ताबिश कमाल से बात की, पहले जरा उनको भी सुनते हैं। हम दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। आज 370 और 35A को लेकर के सुनवाई होनी है। 2 अगस्त से अमूमन ये लगातार होनी है। हमारे साथ जस्टिस हसनैन मसूदी हैं। 2 अगस्त से दिन मुकर्रर किया गया था, आज से सुनवाई होगी। कितनी उम्मीद है आपको कि अब आज से सुनवाई होने जा रही है? देखिए, जो हमने पिटीशन की है और जो बाकी पिटीशन हुई है, तो हमें उम्मीद है कि इंसाफ होगा और हमारे हक में फैसला होगा। तो क्योंकि जो हमने इसमें दलाइल दिए हुए हैं वो दलाइल सब आईनी दलाइल हैं, और जब आईन के पर परखते हैं, जो 5 अगस्त के फैसले हैं, तो वो जुडिशल स्क्रूटनी को ठहरेंगे नहीं, क्योंकि नहीं 370 का जो एप्लीकेशन है नहीं वो आइन के मुताबिक है, और नहीं स्टेट का जो विभाजन है वो आइन के मुताबिक है। तो जाहिर सी बात है, हमारी उम्मीद है और आवाम की उम्मीद है कि बिट्रेल का एक एहसास है कि हमसे जो वादा किया गया था, जब हमें कहा गया था कि आप शामिल हो जाइए, उस वक्त जो एक इंतहानियाँ दी गई थी, जो ज़मानतें आईनी ज़मानतें दी गई थी, जो वादे किए गए थे, उनका सबका उल्लंघन हुआ, सबका वो लेट हुई। तो हम क्योंकि ये आईनी मामला है, तो आइन को दरकिनार किया गया, तो हमें उम्मीद है, क्योंकि हमने जो दलाल दिए हैं वो उनमें वजन है, और जो जवाब आया है वो जवाब इतना कन्विंसिंग नहीं है, इतना वो कोई मौसर नहीं। सरकार ये कह रही है कि हमने 370 और 35A के बाद देखा, और हलफनामा पिछली बार दिया तो कोर्ट ने ये कहा था कि ये कुछ बात नहीं है कि वहाँ पर कारोबार बढ़े, आतंकवाद कम हुआ। आपको लगता है कि उनके उस हलफनामे को कोर्ट से तरजीह मिलेगी? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही वाजे कर दिया कि वो हलफनामे का वो देखेंगे नहीं, क्योंकि ये पोस्ट फैक्टो डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है। मैं आप 2 विन लगा लो, मैं सर का नाम भी यहाँ से लिख देता हूँ, और अपना आशीष सूद की अभी बाइट में टॉस करूंगा पहले। तो ऐसी बात है, ये मैं नाम सर का भी दे रहा हूँ। बहुत अहम है कि 3 बिल लेकर के सरकार आई, इधर मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। आप कह रहे हैं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में मामला है तब तक वो बिल नहीं आ सकते हैं। हमारे एक बिल के बारे में वो था रिऑर्गनाइजेशन बिल, उसके बारे में हमारा इस्तदलाल था, वो नहीं आ सकते, क्योंकि वो पूरा कानून जो पैरेंट है वो यहाँ पर उसकी चुनौती दी गई है। ठीक है ना? तो अब आखिरी एक सवाल और लूंगा। आज यहाँ पर लगभग 31 याचिकाएं आई हैं। 31 याचिकाओं में सबको कंपाइल कर लिया गया है, सब साथ में खड़े हैं। क्या कश्मीरी पंडित भी आप लोगों के साथ हैं? देखिए, जो हमें मिला है उसमें तो अभी उसके बारे में अगर कोई नई कोई दरखास्त हुई है तो उसके बारे में हमें उसकी नकल नहीं मिली, क्या है उसका दरखास्त में क्या दलाल है। लेकिन पहले से यहाँ के जो सिविल सोसाइटी है, जो सारे मुल्क की है, राधा कुमार जी है वो, और तहीब जी थे वो है नहीं, तो पिड़ाई साहब है, तो और बहुत सारे सत्य जैकब है, इंदर सलीम है, बहुत सारी हैं जो यहाँ के दानिश्वर हैं, उन्होंने भी इसको चुनौती दी है। और हमने जाहिर बात है, हम तो इलेक्टेड पार्टीज है, और हमें बिट्रेल का जो हम कह रहे हैं कि हमारे साथ ही हुआ है, तो पहला तो हमारे उमर अब्दुल्ला भी दिल्ली में है। बहुत अहम दिन माना जा रहा है जम्मू कश्मीर की रियासत के हिसाब से आज का दिन। उमर अब्दुल्ला दिल्ली पहुंचे हैं, कैसे देख रहे हैं तो उमर अब्दुल्ला का नाम? 2 एंकर गेस्ट लगाते हो, क्या लगाओगे? चले गया, इसके बारे में सेंटर में विजुअल जाहिर करते हैं कि हमारे दिल्ली में हम देख रहे हैं कि हमसे जो भी जरूरी हमसे तवक्कात है और जो हमें करना है वो हम कर लें सर। तो इसी वजह से ये सिंगल विन है। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। यानी कि आज सुप्रीम कोर्ट आप में तो, 370 कौन सा और वाला? 35A चलो। सुनवाई शुरू हो जानी है। 2 अगस्त से लगातार ये सुनवाई चलने वाली है, और बहुत अहम ये रहेगा कि जम्मू कश्मीर के जो तमाम लीडर्स हैं, तमाम सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो दिल्ली पहुंच गए हैं। खुद उमर अब्दुल्ला भी दिल्ली में मौजूद है। आज इसी सुप्रीम कोर्ट से, जहां मैं खड़ा हूं, इसी सुप्रीम कोर्ट से पल पल की अपडेट आपको करेंगे। आखिर 2 अगस्त से शुरू होने वाली इस सुनवाई में जम्मू कश्मीर की आवाम जो इंतजार कर रही है, क्या वो आज मिलेगा? 370 और 35A आज से सुनवाई होने के बाद क्या जम्मू कश्मीर की आवाम के पास रहेगा, या जो सरकार दलाइल पेश कर रही है, सरकार कह रही है कि सब कुछ अच्छा हुआ है, वो रहेगा? आज के हिसाब से, अगर आज के हिसाब से जम्मू कश्मीर के दिनों को देखा जाए तो बहुत अहम दिन आने वाले भी जम्मू कश्मीर रहने वाले हैं। सहयोगी साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। पॉलिटिकल लीडर्स के रिएक्शन हम अब तक पहुंचा रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला के बाद
रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी क्या कह रहे थे, उनकी बात भी आपने सुनी। और ये जब समाअत शुरू हुई तो उससे कुछ मिनट पहले उन्होंने अपना रद्दमल जाहिर किया था। इधर जब समाअत हो रही है, सरकार ने भी अपने दलाइल दे दिए हैं। 27 तारीख मुकर्रर थी, फरीकैन ने तहरीरी तौर पर अपने दलाइल दिए थे, लेकिन उसके बाद पहले भी और 27 तारीख तक जब तारीख सुप्रीम कोर्ट ने तय की थी 11 जुलाई को, जब 2 तारीख का दिन मुकर्रर किया गया था डे बाई डे हेयरिंग के लिए, तो उसके बाद भी हुकूमत की जानिब से हलफनामे में मजीद कुछ बातें कही गई हैं। लेकिन साथ ही साथ जो मौक़िफ़ सरकार का है वो भी आपके सामने रखते चले, साथ साथ इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे। लेकिन पहले जरा बीजेपी के सीनियर लीडर आशीष सूद इस ताल्लुक से क्या कह रहे थे, वो भी पुरुम्मीद नजर आ रहे हैं। उनकी बात पहले आपको सुनाते हैं। जम्मू कश्मीर के मसले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और तथाकथित मेन स्ट्रीम पार्टीज जिस प्रकार का रवैया अख्तियार कर रही हैं, जिस प्रकार बौखलाई हुई है, वो स्पष्ट दिखाता है कि धारा 370 हटने के बाद भी डाल दिया है, जिस 2 बिन लगा प्रकार दो। से जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पे चला है, एक साइड सर को डाल दो ना, एक साइड मुझे, एक साइड सेंटर में विजुअल डाल दो। तीनों दल घबराए हुए हैं। गांधी, मुफ्ती और अब्दुल्ला जो जम्मू कश्मीर को अपनी रियासत की तरह, जम्मू कश्मीर आवाम को अपने रियाया की तरह नाम क्या नहीं आएगा? आज जब जम्मू कश्मीर देश 2 बिन में तो आता है। सभी राज्यों के साथ तरक्की की कदमताल कर रहा है, इन लोगों को समस्या है। हमें देश के कानून व्यवस्था पर पूरा विश्वास है। देश की सुप्रीम कोर्ट भी, देश का उच्चतम न्यायालय भी संसद के इस फैसले के साथ जम्मू कश्मीर की जनता के हितों के साथ अवश्य खड़ा रहेगा। मुल्क के आइन पर, जमहूरी तर्ज अमल पर यकीन है, यही बात नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान कह रहे थे और वही बात बीजेपी की तरफ से भी कही जा रही है। इस पर मजीद बात करेंगे और साथ साथ समाअत भी चल रही है, वहां से भी आपको सुप्रीम कोर्ट में जो जो कहा जा रहा है आप साथ साथ स्क्रीन पर देखेंगे भी और सुनेंगे भी। एग्जीक्यूटिव एडिटर इशफाक गौहर भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं न्यूज़ रूम से। बहुत शुक्रिया इशफाक ज्वाइन करने के लिए। अभी 10-12 पॉइंट्स जो डिस्कस हुए हैं, तकरीबन 50 मिनट होने वाले हैं हेयरिंग को। कपिल सिब्बल साहब दलाइल दे रहे हैं, तारीखी पस मंजर में भी वो गए हैं। क्या एसेस कर पाए हैं इन अभी शुरुआती निकात से आप? अभी चूंकि आज पहला दिन है और पहले दिन जो रात देर गए, कल भी मीटिंग एक हुई थी इस केस को लेकर, तो उसमें कुछ चीज़ें बड़ी क्लियर की गई थी कि आखिर किस तरीके से ये प्रोसेस आगे बढ़ेगा। और उसी में तकरीबन 1 दर्जन से ज़्यादा वकला की फहरिस्त बनाई गई थी और उन्हें टाइम एलोकेट किया गया था कि वो कितने कितने घंटे बोलेंगे इसके हक में, और उसके बाद सरकार का भी मौक़िफ़ और उन एप्लीकेंट्स का मौक़िफ़ भी होगा जो लगभग इसके खिलाफ है। और अभी जो हमारे पास एदाद-ओ-शुमार जो थोड़ी देर पहले मेरे पास आए हैं, वो तकरीबन 80 घंटे का बनता है। 80 घंटे वकला को दिए गए हैं जो उन्हें टाइम एलोकेट किया गया, जिसमें वो अपनी बात रखेंगे। थोड़ी देर में उस पर आएंगे कि किस वकील को कितना टाइम दिया गया। लेकिन जब आज की समाअत की हम बात करेंगे तो सीनियर वकील कपिल सिब्बल, जिसे गुलाम नबी आज़ाद ने रिकमेंड किया था और उनसे दरख्वास्त की थी कि आप उनके बदले, जो उनकी पिटीशन है उनके बदले पैरवी करें, तो सभी वकीलों ने कल ये फैसला लिया था कि कपिल सिब्बल इस केस का आगाज़ करेंगे। और कपिल सिब्बल ने जब इस केस का आगाज़ किया, उसने तवारीखी पन्नों को पढ़ना शुरू किया और तकरीबन जो मेरे पास अभी आदाद-ओ-शुमार है, कपिल सिब्बल ने तकरीबन 250 के करीब हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट सामने रखे हैं, जिनमें 47 के पहले के हालात जम्मू कश्मीर के कैसे थे, महाराजा हरी सिंह और महाराजा के रंजीत सिंह और उस वक्त के हालात कैसे थे, वो डॉक्यूमेंट सामने रखे। और सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ये है कि जब एक्सेशन हुआ था, जिस पर सिग्नेचर्स हुए थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से और उस वक्त के सदर रियासत की तरफ से और दीगर लोगों की तरफ से, तो उसमें क्या कुछ है, अभी तक उस पर बातचीत हुई है। और सेकेंडली ये कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और स्टेट असेंबलियों के अंदर फ़र्क क्या है, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो आज के दिन में नहीं है, तो किस तरीके से स्टेट असेंबलियाँ उनको रिप्लेस करती है, क्या कुछ कर रही है। अभी तक सिर्फ यहाँ तक जो है वो गुफ्तगू चली है। लेकिन अब जो ये आगे बढ़ेगा 5 अगस्त की ओर आएगा और जो हद इख्तियार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इख्तियार किया है, जिसके तहत उन्होंने 370 के अंदर जो खुसूसी मुराद जम्मू कश्मीर को दिए गए थे, उन्हें हज़फ किया, उन्हें वहाँ से निकाला, उन्हें डाइल्यूट किया
उन पर गुफ्तगू शुरू होगी तो मजीद हिस्टोरिकल बैकग्राउंड्स के साथ जो वहाँ पर बात रखी जाएगी। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, सरकार के जो बैटरी ऑफ लॉयर्स हैं वो वहाँ पर मौजूद है। कुछ क्वेश्चंस उन्होंने जरूर दी थी, बीच में मुदाखलत करने की जरूर की थी, लेकिन उस पर जो सेट नॉर्म होता है सुप्रीम कोर्ट का, उसके तहत वो सुन रहे हैं और प्रॉपर टाइम पर उन्हें जो है वो रिस्पॉन्ड करने का मौका दिया जाएगा। अभी जो मेरे पास डिटेल्स आ रही है, कपिल सिब्बल ने तकरीबन जो टाइम एलोकेट कपिल सिब्बल को किया गया है वो 10 घंटे है, यानी 10 घंटे तक कपिल सिब्बल अपनी बात रखेंगे 370 और 35A के हक में। फिर इसी तरीके से गोपाल सुब्रमण्यम साहब जो हैं उनको भी 10 घंटे दिए गए हैं। डॉक्टर राजीव धवन साहब 3 घंटे में अपना आर्ग्यू कंप्लीट करेंगे। भूषण दीवान साहब 4 घंटे के अंदर करेंगे और एडवोकेट शाकिर हैं 2 घंटे के अंदर करेंगे। जफर शाह जो जम्मू कश्मीर बार एसोसिएशन कश्मीर के अंदर फॉर्मर सदर है, वो भी एक पिटिशनर है, उन्हें 8 मिनट दिए गए। इरफान लोन जो बीबीसी मेंबर है उन्हें 10 मिनट दिए गए और इसी तरीके से दीगर लोग जो तकरीबन 18 के करीब एडवोकेट्स हैं उन सबको जो है वो टाइमिंग दी गई। लेकिन मेजर पोर्शन ऑफ टाइमिंग जो है वो उन बड़े वकीलों को दी गई है जो लगातार पहले दिन से ही इस हक में थे कि इस केस की समाअत होनी चाहिए और इस केस की समाअत के दौरान क्या कुछ होना चाहिए। अभी जो लेटेस्ट आ रहा है कि जफर शाह को 8 घंटे दिए गए हैं और चौधरी उदय सिंह 4 घंटे के लिए बोलेंगे। संजय पारिकर साहब 2 घंटे के लिए बोलेंगे। गोपाल श्रीनिवासन साहब 3.5 घंटे अपनी बात रखेंगे। मोनिका गुरुस्वामी 30 मिनट तक अपनी बात रखेंगे और इस तरीके से 18 एडवोकेट्स की फहरिस्त जो है वो तरतीब दे दी गई है और कुल मिलाकर अगर इसी टाइमलाइन में खत्म होता है तो ये 70 घंटे के आसपास बहस होगी जो हर दिन अब चलेगी और लगभग सिर्फ 2 दिन छोड़कर हफ्ते में यानी फ्राइडे और मंडे को छोड़कर कंटिन्यूसली ये बहस जो है वो चलती रहेगी। अच्छा, कपिल सिब्बल साहब की तरफ से भी कहा गया कि शायद जुमेरात तक या आज ही वो कोशिश करेंगे अपने दलाइल खत्म करने की, आज बल्कि कल शाम तक वो अपनी बात फाइनल कर सकते हैं, ये जो 10 घंटे का वक्त है। लेकिन जहां उन्होंने हिस्टोरिकल फैक्ट्स गिनवाए जिन पर हुकूमत भी कई मरतबा सुप्रीम कोर्ट के अंदर या बाहर भी लीडरान बीजेपी की तरफ से या सरकार में बैठे लोग ये कहते नजर आए हैं कि अब तक जो कुछ हुआ है वो हमने वैसे ही किया है जैसे माजी में भी 370 में अमेंडमेंट्स हुई हैं, यानी फैसले को डिफेंड करते हुए नजर आए। लेकिन जब आज बात चली तो शुरुआती 5 मिनट्स में 21 नवंबर 2018 का दिन भी याद कराया गया जब असेंबली को तहलील कर दिया गया। शुरुआती दौर में कपिल सिब्बल साहब ने कहा कि जो इकदामात थे वो मुशावरत करने के बाद भी उठाए जा सकते थे या ठीक 370 के मुतालिक जब फैसला लिया गया था तो उससे पहले भी, लेकिन जो तरीकाकार अपनाया गया वो गैर आईनी था। उससे क्या ये लगता है कि पिटिशनर्स के थोड़े से शुरुआती दौर में हौसले जो बात रखी गई जिसको बार बार अलग अलग फ्रंट्स पर अलग अलग स्टेजेस पर दोहरा रहे थे वो आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर शुरुआती 5 मिनट्स में सामने आई? देखिए, चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है या आईनी बेंच है, चीफ जस्टिस साहब सुन रहे हैं, जो पिटिशनर्स हैं जो इसके हक में है कि 370 गलत तरीके से हटाया गया, विदाउट कंसल्टेशन हटाया गया और प्रॉपर प्लानिंग और पॉलिसी जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की होनी चाहिए थी वो मुशावरत इसमें नहीं है, इसलिए इसको रेस्टोर अंडन करके इस फैसले को ख़त्म होना चाहिए। अगर आप उनकी बात को सुनेंगे और उनके बॉडी लैंग्वेज को देखेंगे तो ये मान रहे हैं कि जिस सरकार ने अपना एफिडेविट किया पेश नया, जब दोबारा उन्होंने एफिडेविट दिया तकरीबन 100 सफ़ा पर मुश्तमिल जिनमें जम्मू कश्मीर के बदलते हालात, जम्मू कश्मीर के बदलते वाक़ात का जिक्र किया गया, मिलिटेंसी का जिक्र किया गया, तामीरात का जिक्र किया गया और उन लोगों को हुकूक देने की बात कही गई जिन्हें सन 47 के बाद हुकूक नहीं मिले थे, जिन्हें वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज गोरखास और दीगर लोग हैं। लेकिन उसमें जो चीफ जस्टिस साहब ने एक पॉइंट नोट किया और इन्होंने कहा कि देखिए हम इसको ऑन रिकॉर्ड नहीं लाएंगे क्योंकि हमारा दायरे इख्तियार जो आज का है वो सिर्फ ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी देखना कि क्या ये सही तरीके से हटा था या नहीं। तो वहीं से एक लीड मिली है वकीलों को कि सरकार जिस मौके को लेकर आ रही है बदलाव और तामीर और तरक्की को, शायद अदालत इस पर ना जाए और अदालत सिर्फ इसको देखे कि कानूनी पहलू इसमें सही है नहीं है। उसकी वजह से जो तकरीर आज की कपिल सिब्बल साहब की है या जो दीगर वकील वहां पर मौजूद है उन्हें यह लग रहा है कि हालात के मुवाफिक है। लेकिन जब सरकार अपना मौक़िफ़ रखेगी, जैसे आपने खुद कहा हुई है, खामोशी से बहुत बार इसको डाइल्यूट किया गया और बहुत ही हसास चीजें हटाई गई और उस वक्त किसी को भनक भी नहीं लगी। तो उस वक्त और आज के ऑर्डर में कितना फर्क है उस पर भी होगी। देखिए
देखना होगा, क्योंकि अब ये बहस का आगाज हो गया है। जब सरकार अपना मौक़िफ़ रखेगी, जब वो वकील जो इसके हक में है कि 370 हटना सही डायरेक्शन में सही फैसला था, जब वो अपना मौक़िफ़ रखेंगे तो तभी जाकर एक वाज़िया फर्क सामने आएगा सबके सामने कि क्या कुछ हो रहा है। लेकिन जो हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स और एविडेंस देने की कोशिश आज की गई है, वो दरअसल तारीखी पन्नों के हिसाब से देखा जा रहा है। लेकिन देखना होगा कि सरकार ने जब डिसीजन लिया, उन्होंने जिस प्रोस्पेक्टिव को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया, वो क्या था, जब वो खुलकर सामने आएगा तब जाकर सारी बातें खुलकर सामने आएंगी। एक चीज और भी मुख्तसरन बताइएगा कि अभी कपिल सिब्बल से अब जब दलाइल दे रहे हैं, तकरीबन 1 घंटा होने वाला है, 10:45 के आसपास शुरुआत हुई थी। एक बात उन्होंने भी, और जहां हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स की तरफ वो जा रहे थे, दूसरा उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की जो पोजीशन थी भारत के साथ, जिसका सरकार हवाला दे रही है, या जब फैसला लिया गया तो तब भी ये कहा गया कि जम्मू कश्मीर को हमेशा के लिए मर्ज कर दिया गया जम्मू कश्मीर के साथ। उस पर आईनी तौर पर वो ये जवाब पेश कर रहे हैं कपिल सिब्बल साहब कि उस पोजीशन को कभी तब्दील नहीं किया जा सकता। इस पर हुकूमत का कोई मौकिफ सामने दोबारा से आ सकता है, या फिर शायद पहला प्रोसेस यही होगा कि जो आज कहा गया कि तरीकाकार सही नहीं था, पहले उसको डिफेंड करने की तरफ सरकारी वकला जाएंगे? ये जो पॉइंट्स रेज किए गए, चूंकि ऑनलाइन सारा चल रहा है, हम भी लाइव ट्रांसमिशन दिखा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या कुछ हो रहा है जी। जो पॉइंट्स रेज किए गए हैं, जो सवाल कपिल सिब्बल की तरफ से उठाए जा रहे हैं, वो हिज़्ब इख्तियार की जमात, सॉलिसिटर जनरल और उनकी पूरी टीम जो है वो मॉनिटर कर रही है। जब उन्हें 8 से 9 घंटे का वक्त दिया जाएगा, वो पॉइंट टू पॉइंट एक एक बात का जवाब देंगे, रिजॉइंडर बनेंगे, एफिडेविट देंगे, तब जाकर पता लगेगा कि सरकार का बुनियादी मौक़िफ़ क्या है। अभी तक जो मोटा मोटा लग रहा है वो तहमील तरक्की, इन्फिल्ट्रेशन और दीगर चीज़ें, अलहदगी पसंदी को काबू करना, वो मोटा मोटा लग रहा है, जिसको लेकर शायद अदालत के अंदर मोटी फाइल नहीं बन सकती है। लेकिन अगर आप फैज़ान मुस्तफ़ा जो सबसे टॉप मोस्ट कानून को जानने वाले हैं, वाइस चांसलर भी है, उनके गुफ्तगू को सुनेंगे 370 के मुतालिक, तो उनका मानना कि देखिए अब ये जो प्रोसेस शुरू हुआ है, ये अगस्त के महीने में खत्म होना, ये दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है, बल्कि थोड़ा लंबा खींचेगा, 2024 के चुनाव तक भी जा सकता है, उसके बाद भी जा सकता है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जितना ये लंबा उतना ज्यादा ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए मजबूत होता हुआ नजर आएगा, ये फैज़ान मुस्तफ़ा का मानना है। लेकिन जो हिस्टोरिकल पॉइंट्स हैं, उनका जवाब जरूर सरकार की तरफ से दिया जाएगा, और जो पॉइंट्स रेज किए जा रहे हैं, जैसे आज किए जाए या डॉक्टर धवन करेंगे, दीगर वकील करेंगे और पॉइंट्स रेज, उसका जवाब सरकार की तरफ से आएगा, उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। इसीलिए ये डे टू डे हियरिंग है, हर दिन शाम को आपको पता लगेगा कि आज के दिन में टोटल कितने क्वायरीज उठी है और सरकार इन क्वायरीज का क्या करने जा रही है, एक साथ जवाब देगी या अलग-अलग तौर पर हर दिन जवाब वो सबमिट करती है। ठीक है, अभी एक तरफ की बात सुनी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात फराहम करने के लिए। मजीद इस वक्त की इसमें जो पेशरफ्त हो रही है उस पर एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ थे। वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पर वापस आएंगे तो कुछ चीजें ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाएंगे अब तक मार्च 2020 से पेशरफ्त क्या हुई है, और आज जो सुबह से हुआ है उस पर चंद बड़ी बातें आपके सामने रखेंगे। ये साउंड देना जरा सर, इसको कोर्ट वाला जरा ऑन करना। हाँ Any order made there under offences against laws with respect to any of the aforesaid matters, inquiries and statistics for the purposes of any of the aforesaid matters, the jurisdiction and power of all courts with respect to any of the aforesaid matters, but except with the consent of the ruler of the exceeding state, not so. चलो ग्राफिक्स रखो, थोड़ा जल्दी जल्दी लेना। तो मुजफ्फर शाह की बाइट है आपको। कि इसका भरपूर एग्जामिनेशन किया जाएगा और कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड किया जाएगा और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों को जस्टिस दी जाएगी। अब जस्टिस की बात आ रही है, गवर्नमेंट कह रही है बहुत सारी चीजें वहाँ पर अच्छी हुई, स्मूथ हुआ है, वहाँ से आतंकवाद कम हुआ है, पत्थर कम हुई है, टूरिज्म सेक्टर में बढ़ा हुआ है, जॉब्स निकली हैं, जो दलाइल कोर्ट्स की तरफ से दी गई। आज वो में सब दलाइल दी गई हैं, आप मानते हैं कि ये सबको एक्सेप्ट किया जाएगा? जी नहीं, वो तो पहले ही कोर्ट ने रद्द कर दिया है। आज कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी की बात है, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन आज उसका मामला है। कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर को 370 दिया। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एक आईनी इदारा है दोनों,
उसको आपने उठा के बोल दिया जी मैं जी मुझे किसी के ख्वाबों से हिंदुस्तान को चलाना है। किसी के ख्वाबों से हिंदुस्तान नहीं चलता है, हिंदुस्तान कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। उसका आज एग्जामिनेशन है और जो हम बात कर रहे हैं जो सही बात है। कितनी उम्मीद है आपको, कितनी उम्मीद है रेगुलर सुनवाई होने वाली, कितनी उम्मीद है? क्या जिस लड़ाई को आप लड़ रहे हैं वो उसका मसला कुछ निकलेगा? जहां तक कॉन्स्टिट्यूशन का ताल्लुक है, दिस इज एन ओपन एंड शट केस। ये 5 मिनट में डिसाइड हो सकता है। आपने कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ा दी, आपका एग्जामिनेशन है और पूरे मुल्क नहीं पूरे वर्ल्ड की निगाहें आज ऐसे बड़े ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पे है जिसका एक नाम है पूरी दुनिया में। सो आज आपका एग्जामिनेशन है सबका और कुछ नहीं है। आज हमसे ज्यादा एग्जामिनेशन यहाँ का है। जो फैसला आपने उधर पार्लियामेंट में लिया, क्या आपको आईन और कानून इजाजत देता है? जो फैसला आपने लिया, जिस रंग से आपने वो फैसला लिया, डज कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ यू फॉर 370? 370 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बगैर कोई हाथ तक नहीं लगा सकता है। वो हमारी आज यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने में हमारी अर्जी है। देखिए इंशाल्लाह उम्मीद है कि वी विल विन हैंड्स डाउन। चलिए उम्मीद है, लेकिन सरकार को भी उम्मीद है कि जिस तरह से सरकार ने कदम बढ़ाया था उसे जम्मू कश्मीर के अवाम ने पसंद किया। ये उम्मीदें दोनों तरफ से और कौन अपनी उम्मीद पर खरा उतरता है, जबकि एएनसी वाइस प्रेसिडेंट मुजफ्फर शाह का कहना है कि आज सुप्रीम कोर्ट का इम्तिहान है। सहयोगी साथ के साथ ताबिश कमाल ले लिए। चलिए, ताबिश कमाल से बात कर रहे थे अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुजफ्फर शाह। पुरुम्मीद दोनों तरफ से लोग हैं या पिटिशनर्स जो हैं हुकूमत के फैसले को चैलेंज कर रहे हैं और हुकूमत डिफेंड कर रही है। हलफनामे में भी कुछ बड़ी बातें कही गई हैं और वकला भी अपनी अपनी बात रखेंगे। वो सिलसिला भी शुरू हो चुका है। 1 घंटा हो चुका है जब इस वक्त एक तरफ ऐवान की कार्रवाई चल रही है तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर कार्रवाई इस वक्त चल रही है। जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से बात हो रही है। दफ़ा 370 पर मारूफ वकील कपिल सिब्बल अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन अब तक जो केस में हुआ, कुछ बड़ी बातें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपकी याद दहाने के लिए जो शायद आपकी नज़रों में ना आए हों या अगर आए भी हों तो आप भूल गए हों, आपको दिखाने के लिए दोबारा से ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाएंगे और हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है, हुकूमत ने क्या दलाइल अब तक दिए हैं। 2-3 बड़ी बातें वो आपके सामने रखते हैं। दफ़ा 370 की मनसूखी का केस पहला मौका है, आज इस पर समाअत हो रही है। इस वक्त सिलसिला चल रहा है, जैसा शुरुआत से हम बता रहे हैं 10:45 पे केस की शुरुआत हुई है। रोज़ाना अब समाअत होगी। पीर और जुमे को छोड़कर 2 दिन हफ्ते में ऐसे हैं जहां पर इस केस की डेली बेसिस पे सुनवाई होगी। 5 जजों की आईनी बेंच 370 पर समाअत कर रही है। DY चंद्रचूड़ जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, बेंच की सरबराही कर रहे हैं। उनकी तरफ से अपनी बात इस वक्त जो है वो दलाइल सुनने के बाद इस पर मजीद बात करेंगे। हलफनामे से आईनी मसले पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही क्लियर कर दिया है। पिछली बार जब 11 जुलाई को केस यहां पहुंचा और मामला आखिरी बार मार्च 2020 में अदालत के अंदर पहुंचा था। 2020 में मार्च का महीना था जब ये केस सुप्रीम कोर्ट के सामने तवील मुद्दत से इंतजार किया जा रहा था। इस फैसले की समाअत जल्द शुरू हो और इसमें कई लीडरान आगे आए, पॉलिटिकल वर्कर्स सामने आए और कुछ लोगों की तरफ से बात भी अपनी रखी गई। आखिरी बार ये केस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवाई और जस्टिस सूर्यकांत जिन पर मुश्तमिल ये बेंच है, इस वक्त समाअत की जा रही है। हुकूमत की जानिब से भी कुछ बड़ी बातें कही गई हैं और जब से ये केस मार्च 2020 में सुप्रीम कोर्ट में दर्ज हुआ उसके बाद हुकूमत ने 2 बार अपना मौक़िफ़ रखा है, हलफनामे के जरिए अदालत में अपनी बात रखी है। कुछ एक बड़ी बातें और जम्मू कश्मीर में जो तब्दीलियां आई हैं उस पर बात की। आप पीछे जा रहे हो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पे जाओ। हुकूमत की जानिब से क्या कहा गया है? दफ़ा 370 के मामले पर कहा गया कि कई तब्दीलियां 5 अगस्त 2019 के फैसले के बाद आई। यह हुकूमत का मौक़िफ़ है जो सरकार ने अपने वकील के ज़रिए, सॉलिसिटर जनरल के ज़रिए 370 के मामले पर अपना जवाब दाखिल किया है। साथ ही साथ हुकूमत कहती है कि पथराव, दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी ख़त्म हुई, वाक़या कम हुए। ये मरकज़ का मौक़िफ़ है। इसके साथ साथ
शहरियों और सिक्योरिटी फोर्सेस की हलाकतों में कमी आई। जो अदादोशुमार साल सामने आते थे कि इतने जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान, बीएसएफ के, फौज के, दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों के जवान या आम शहरियों की हलाकतें हुई, हड़तालों में, ऐसे वाक़यात में जो तब्दीली लाई है। यह कदम जो है खित्ते में बेमिसाल तरक्की, सलामती और इस्तेकाम लेकर आया है। ये भी अदालत के अंदर हलफनामे के जरिए हुकूमत ने बात रखी है। इसके अलावा हुकूमत मानती है कि पसमानदा तबकों के साथ बरसों बाद इंसाफ हुआ। ये सारी बातें जो मरकजी सरकार की तरफ से आर्टिकल 370 के डिफेंस में अभी तक कही गई हैं, और दूसरी तरफ अर्जी गुजार क्या कहते हैं कि फैसला गैर आईनी है और गैर कानूनी है। अब से थोड़ी देर पहले जो आप हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमाओं को सुन भी रहे थे, जो सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले अपनी बात रख रहे हैं कि फैसला अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और इसीलिए ये चैलेंज करना एक तारीखी केस है, जिसको खुद कपिल सिब्बल ने भी शुरुआती 3-4 मिनट में कुछ बातें क्लियर की। दोबारा से सुप्रीम कोर्ट चलेंगे। ये वो चंद बड़ी बातें थी आपकी याद दहानी के लिए कि अब तक इस केस में क्या क्या हुआ, क्या बड़ी बातें थी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी भी कपिल सिब्बल, जिनका 10 घंटे का वक्त है, दलाइल रख रहे हैं। The one appointed by me should also be a member of the cabinet. I take this opportunity of civil and military solely on the basis of their merit and irrespective of creed and community. My Council of Ministers shall take appropriate steps as soon as restoration of normal conditions has been completed. Convene a national assembly based upon adult franchise, suffrage, as far as practical, is open to the population of that way. In a word, he was adopting the principles that were adopted by us. The Constitution to be framed by the National Assembly shall provide adequate safeguards for the minorities and contain appropriate provisions guaranteeing the freedom of conscience, freedom of speech, and freedom of assembly. The National Assembly, as soon as the work of framing the new Constitution is completed, submit it through the Council of Ministers for my acceptance. In conclusion, I repeat and hope that the formation of a popular interim government and the inauguration in the near future of a fully democratic Constitution will ensure the contentment, happiness, and moral and material advancement of the people. So go back to volume 2. Item 20, volume 2, PDF page 38. Mothers, in a football field where there is no play, mothers, that time has to be excluded. I submit to that. Who would know what players they used to say? I submit to that. Also integration into the union by signing merger agreements or covenants of unionization. The state of Jammu is